You quoted Article 1 of the Constitution saying India, that is Bharat, is a union of states, as per the Constitution. But if you turn a page back and look at the preamble, it does mention that India is a nation. Bharat itself is one of the oldest surviving civilizations of the world. And the term finds its origin in the Vedas. So we have a really old civilization. So Chanakya, even Chanakya, when he interacted with his students in Takshashila, he made it clear to them that they might belong to different Mahajanpads, but ultimately they belong to a nation that is Bharat. Adi Shankaracharya, he said, 10 seconds. Did he use the word nation? He said, you belong to a Rashtra. Rashtra is, the Sanskrit. Rashtra is kingdom. Rashtra, no, it's a Sanskrit name for a nation. So, Nation is the word nation, right, is a Western concept. So when I talk about nation, I don't just talk about a political entity, because we've had these experiments across the world. You had USSR, you had Yugoslavia, you had the experimentation with the United Arab Republic. So unless nations have a strong socio-cultural and emotional bonding and a composite culture, a constitution cannot make a nation. Nations make constitutions. My question is, don't you think as a political leader, your idea of India is not only flawed and incorrect, but also destructive because it attempts to whitewash a history of thousands of years? With what happened a couple of days ago, there was another meeting in London in which similar ideas were made by Rahul Gandhi that India is not a nation, it is a union of states, which was a result of negotiations between states. And so I was quite concerned about it, and he started this talk also with the same idea. So I questioned him on this and asked him, how are you saying that India is not a nation when we all know that Bharat itself, the term finds its origin, in the Mahabharata, the Vedas, you have the Vishnu Puran, and such a, long history of thousands of years in which we share similar cultural ethos, values, and a civilizational history. Now, during the time when I was making these comments, there was a lot of interruption. Some of it was from the interviewer, but there was also a lot of denial, agitation, and people around me were getting quite irritated because they probably subscribe to a different kind of ideas, which feel that India is a political, artificial kind of entity which was found 75 years ago, which I completely disagree with. And I'm sure most of Indians who have grown up here, who associate with the Bharatiya Sanskriti, do not believe in it. Prime Minister Modi has said this on many occasions, that India has a great cultural heritage and a civilizational history, and Indians need to be proud of it, need to know more about it, need to acknowledge it. And that's where the idea of Indian nation comes from. Mr. Verma, can I also take this one? Tokyo Kannada Balaga, and we are from Karnataka. And Modi ji ge Jayavagale. What does that mean? Modi ji ki jai. Modi ji ki jai. And more voices, more voices. Yes, we are so excited now. Just we are waiting. They'll be reaching, I think our PM will be reaching in soon, 2 or maybe 20 minutes. So we are so excited. क्या एक चीज प्रधानमंत्री से आप सुनना चाहें? We are so excited to listen something special. I don't know. Maybe something as spiritual things. Now we are seeing Shinkansen, so we want something else to take, like industry, manufacturing industry, something to go from India. Right. Very enterprising Indian community here, and they have thoughts on Prime Minister. They want to hear about. Would you want to speak something about Prime Minister's address? Yes. आप कुछ carry कर रहे हैं? नमस्ते मोदी जी, एक और है नमस्ते। यस, हम लोग जो है ना मोदी जी को वार्म वेलकम कर रहे हैं, और मोदी जी जब भी यहाँ पे आते हैं तो हमें एक जो है ना एनर्जी दे के जाते हैं यहाँ पे। सो हम वेट कर रहे हैं कि वो आए और हमारे लिए कुछ दे के जाएं कि हम फिर इसके बाद जो है ना इंडिया जापान के तो कुछ अच्छा करें। आज तक जब भी प्रधानमंत्री आता है हम लोग को कोई पूछता भी नहीं था, ऐसा लगता है हम लोग कचड़ा है। अभी जो प्रधानमंत्री बना हुआ है हमें इतना पूछता, हर देश में जाकर पूछता है, लगता है कि नहीं हमें कोई मिलेगा। और इनकी वजह से हमारी पूरी जापान में जान हमें
में पहचान बनाए कि हम कुछ है, हम हिंदुस्तानी हैं। हम उस देश की बात से, जिस देश में गंगा बहते हैं, जमुना से मिल गए, गंगा जमुना से आप कुछ कह रहे हैं? मंदिर का इसने जगह दान हम किया लोग अभी मंदिर बनाया, राम मंदिर बना इब्राकी में, हम लोग जापान में राम मंदिर बना रहे हैं। मंदिर बना रहे हैं। और हमें जो है ना, अभी हमें जो आगे शिक्षा दिया वो लोगों ने तो हिंदुस्तान ने शिक्षा दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे परंपरा, ये संस्कृत, हमारे जो हिंदू धर्म ये बचा रहे और बसता रहे। ये सब हमें सिखाया, आज पहले बार सिखाया, मोदी जोगी ने सिखाया, वरना हम अपने को भूल गए थे। जिस हिसाब से मोदी जी ने राम मंदिर हिंदुस्तान में बनाया और सनातन धर्म को जिस तरह से जागृत किया है, तो हमारा भी हमारी कर्म भूमि में हर एरिया में हम भी राम मंदिर बना रहे हैं। और पहला राम मंदिर टोक्यो में ऑलरेडी जगह वगैरह सब कुछ डिसाइड होगी और बनने वाला जल्दी। राम मंदिर in Tokyo. Some women, Namaskar ji. You are here to welcome the Prime Minister. What do you want to hear from him? मैं सबसे पूछूंगा एक। हम चाहेंगे मोदी जी हम हमेशा उनको टीवी पे देखते हैं और इंडिया के इतनी जो उन्होंने विकास किया वो सब बातें सुनते हैं। हम चाहते हैं जापान और इंडिया के रिलेशनशिप को और संबंध मजबूत बनाए। हम उनसे उनकी पॉजिटिविटी और उनकी इंडिया और इसके बीच की सारी वो स्पीच सुनने आए हैं। आप बताएं। मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी यहाँ पर आए और पूरी जनता को इंस्पायर करें कि वो इतना अच्छा काम वहाँ पर कर रहे हैं। वी आर वेरी प्राउड टू हैव। Are you making some? आप कुछ तैयारी करके आए हैं? कुछ एक साथ खड़े हुए हैं? नहीं, कुछ गाना गाने वाले हैं, कुछ वेलकम करने वाले हैं। हाँ, कुछ बात बताइए, सुनाइए। गाना सुना सकते हैं। रश्मि, ओके। We love you मोदी जी, we love you मोदी जी, we love you मोदी जी, love you मोदी जी। जापान में आपका सुस्वागतम।